हेलो एवरीवन, वेलकम। आज से पॉलिटी स्टार्ट करेंगे। पहला टॉपिक है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड प्रिएम्बल। लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन। Who among the following political leaders suggested the dissolution of the Indian National Congress as a political organization and its replacement by Lok Sevak Sangh? आंसर इज महात्मा गांधी। गांधी जी चाहते थे कि इंडिपेंडेंस को अचीव करने के बाद कांग्रेस को डिसॉल्व कर दिया जाए, क्योंकि कांग्रेस का मेन एम था टू अचीव इंडिपेंडेंस, और उसका मेन एम इंडिपेंडेंस अचीव होने के बाद पूरा हो गया था। लेट्स सी व्हाट वर द फीचर्स ऑफ लोक सेवक संघ। लोक सेवक संघ, गांधी जी चाहते थे कि लोक सेवक संघ के अंदर सेल्फ गवर्निंग यूनिट्स डेवलप हो, जिन्हें अब हम पंचायत की तरह से देखते हैं। पर्सनल कॉन्टैक्ट्स वो चाहते थे लीडर्स और विलेजर्स के बीच में बन जाए। सेल्फ सपोर्टिंग विलेज वो चाहते थे बने, जिसमें सेल्फ सपोर्टिंग हैंडीक्राफ्ट्स और सेल्फ सपोर्टिंग एग्रीकल्चर हो। और वो चाहते थे कि जो इंडियन विलेज फोक है उसको सैनिटेशन और हाइजीन के बारे में अवेयर किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन। बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल डेजिग्नेटेड एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? सिविल सर्विसेज 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया। आंसर है इसका चार्टर एक्ट ऑफ 1833। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया, एंड फर्स्ट सच गवर्नर जनरल वाज लॉर्ड विलियम बेंटिक। सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन इन सिविल सर्विसेज लेकर के आया गया। लॉ कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड एंड द चेयरमैन ऑफ लॉ कमीशन वाज लॉर्ड मैकॉले। नेक्स्ट इज चार्टर एक्ट ऑफ 1793। चार्टर एक्ट ऑफ 1793 से ट्रेड मोनोपोली को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की 20 ईयर्स के लिए बढ़ा दिया गया, और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज गिवन अथॉरिटी ओवर गवर्नर जनरल ऑफ मद्रास and Governor General of Bombay. This act also separated revenue administration and judicial functions. Then comes Pitt's India Act. Pitt's India Act introduced dual system of control. इसमें दो system of control बनाए गए। One was Board of Control, second was Court of Directors. Board of Control को पावर दिया गया सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स को कंट्रोल करने का, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को कमर्शियल अफेयर्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 the functions of provincial government were divided into reserved and transferred subjects. Which of the following were treated as reserved subjects? Administration of justice, local self-government, land revenue, पुलिस। फर्स्ट ऑफ ऑल रिजर्व सब्जेक्ट्स वो होते थे जिनके ऊपर जो लॉ बनाता था या कोई भी अमेंडमेंट करता था वो करता था गवर्नर जनरल, और ट्रांसफर सब्जेक्ट्स वो थे जो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ काउंसिल को दे दिए गए थे कि आप इनका एडमिनिस्ट्रेशन देख लो। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस तो कभी भी ब्रिटिशर्स हमारे हाथ में नहीं देंगे, इलेक्टेड लोगों के हाथ में। लैंड रेवेन्यू भी नहीं देंगे और पुलिस भी नहीं देंगे। इसका आंसर है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। आंसर ये मीन्स ये इनकरेक्ट है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इनकरेक्ट है, तो इसका आंसर है 1, 3 एंड 4। देखते हैं। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वाइसरॉय ऑफ इंडिया बना दिया गया इस एक्ट से, और उसको एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल प्रोवाइड की गई 8 मेंबर्स की। सब्जेक्ट्स भी डिवाइड किए गए रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स में। रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स वर एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नर एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स वर गवर्नड एडमिनिस्टर्ड बाय मेंबर्स ऑफ काउंसिल, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ काउंसिल। लॉ एंड ऑर्डर, फाइनेंस, लैंड रेवेन्यू इसको रखा गया रिजर्व्ड में। हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर इसको ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स में दे दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following is referred to in the Constitution as the date of its commencement?
कमेंसमेंट की डेट क्या दी गई है? 26 नवंबर 1950, बट एज वी नो 26 जनवरी 1950, एज वी नो 26 नवंबर 1949 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो गया था, और इस डेट से ही कुछ आर्टिकल्स लागू कर दिए गए थे। बट ये जो डेट है 26 जनवरी 1950, इसे हमने बचा करके रखा था कि इस दिन हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस करेंगे टू कमेमोरेट पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज नेहरू जी ने लाहौर सेशन में डिक्लेयर किया था, उसको कमेमोरेट करने के लिए हमने इस डेट की इंपॉर्टेंस बनाए रखने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को 26 नवंबर 1950 से लागू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, What was the exact constitutional status of India on 26 January 1950? इसका आंसर है a sovereign democratic republic. Socialist, secular and integrity, these were the three words जिन्हें 42nd amendment constitutional amendment के थ्रू ऐड किया गया। इससे पहले ये वर्ड्स नहीं थे preamble में। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following statements with regard to preamble of the Constitution is not correct? The secular democratic republic was not there in the preamble originally. True. अभी देखा हमने. The preamble contains the basic structure of the Constitution. This is also true. जब basic structure में कराऊंगी तो भी आप इसको एक बार पढ़ेंगे. By itself, the preamble is not enforceable in court of law. This is also true. Supreme Court has held that the preamble cannot be considered as an aid to the legal interpretation of the Constitution where the language is ambiguous. Supreme Court ने ऐसा नहीं कहा है। preamble के लिए देखिए preamble पार्ट है या नहीं है, preamble को कैसे यूज करना है, इसके लिए ये 3 केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। बेरुबारी केस ऑफ 1960, केशव नंदा भारती केस, एंड देन LIC ऑफ इंडिया केस। बेरुबारी केस 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल ऑफ इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फिर केशव नंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देन कम्स LIC ऑफ इंडिया केस। LIC ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट नॉट अ सोर्स ऑफ पावर, इट इज नॉट जस्टिसिएबल, not enforceable in court of law। आप सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ प्रियम्बल के बेसिस पे आप किसी भी कोर्ट में जाकर के ये नहीं कह सकते कि मेरा ये राइट वायलेट हो रहा है, ये राइट वायलेट हो रहा है। बट सुप्रीम कोर्ट ने ये भी एक चीज इंक्लूड करी दैट कोर्ट्स कैन यूज इट इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कोर्ट्स किसी और आर्टिकल या किसी और पार्ट के साथ इंटरप्रेट करने के लिए प्रियम्बल को यूज कर सकते हैं, बट इसका इंडिपेंडेंटली कोई लीगल इफेक्ट नहीं है। दिस वाज द लाइन, इट हैज नो लीगल इम्पैक्ट इंडिपेंडेंटली। ये सुप्रीम कोर्ट ने LIC ऑफ इंडिया केस में कहा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which among the following was made responsible for framing of the Constitution of Free India? Constituent Assembly, सबको पता है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर बनी थी, कैबिनेट मिशन प्लान। इसके प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और टेम्पररी प्रेसिडेंट जो फर्स्ट मीटिंग के लिए चूज किए जाते हैं वो थे सच्चिदानंद सिन्हा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, with regards to Constitution of India, which of the following is not correct? The words socialist, secular were not originally the part of Constitution. The preamble states the object of the Constitution of India. The preamble is enforceable in court of law. A republic refers to the people as the source of all authority under the Constitution. ये अभी हमने पढ़ा है। That preamble is not enforceable in court of law. C is the answer. Let's move to the next question. The preamble of Constitution of India is
a part of constitution but has no legal effect. ये सही लग रहा है कुछ कुछ. A part, not a part of constitution and has no legal effect either. Not a part, no legal effect, तो part तो हमने देखा कि है, ये भी गलत हो गया. A part of constitution and has same legal effect as any other part, ये भी गलत है, same legal effect तो नहीं है. A part of constitution but has no legal effect independently of other parts, this is right. अभी दो ऑप्शंस हैं जो हमें राइट दिख रहे हैं, पर अभी इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा सही है, तो ये ज़्यादा सही है, ये गलत हो जाएगा. अगर हमें ये ऑप्शन नहीं दिया होता क्वेश्चन में तो हम ये वाला करेक्ट करके आते. इसीलिए पूरा क्वेश्चन पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. कई बार हम देखते हैं कि एक आंसर में सही लग रहा है, उसको टिक कर देते हैं, पर बाद में हम जाते हैं तो देखते हैं कि नहीं, दूसरा वाला ऑप्शन है वो ज़्यादा सही है, तो आपको ज़्यादा सही वाला चूज करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? Dr. Rajendra Prasad, we have seen. Who among the following stated in the Constituent Assembly on 26th January 1950 India was going to enter a life of contradictions? B.R. Ambedkar. ऐसे इन्होंने क्यों कहा था? क्योंकि हमने अडॉप्ट किया था यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज. इसके लिए हमें पूरे वर्ड से बहुत क्रिटिसिज्म मिल रहा था, क्योंकि जितनी भी बड़ी डेमोक्रेसीज हैं उनमें से किसी ने भी इंडिपेंडेंस गेन करते ही यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज को अडॉप्ट नहीं किया था. और इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा थी, इलिटरेट लोग इतने ज़्यादा थे, तो बहुत सारा क्रिटिसिज्म मिल रहा था कि जो लोग पढ़ नहीं पाते, लिख नहीं पाते, जिन्हें कोई समझ नहीं है, वो कैसे ही इतनी बड़ी एक डेमोक्रेसी को चला पाएंगे, कैसे इलेक्ट कर पाएंगे. इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा था India was going to enter a life of contradictions. Let's move to another question. Which of the following terms were added to the Preamble of Constituent Assembly of India? ये अभी हमने देखे कौन कौन से टर्म्स ऐड किए गए थे. सोशलिस्ट ऐड किया गया था, सेक्युलर ऐड किया गया था, इंटीग्रिटी ऐड किया गया था, फ्रेटर्निटी ऑलरेडी था. 1, 2 and 3 is the answer. Nothing to explain. Who among the following was the advisor of Constituent Assembly? B.N. Rao. B.N. Rao was also the first Indian to become judge in International Court of Justice. Let's move to another question. On which of the following dates Constituent Assembly of India adopted its national flag? Very factual. Answer is 22 July 1947. यूपी PSC 2020. इस तरह के क्वेश्चंस बिल्कुल प्योरली फैक्चुअल पीसीएस में आप देखेंगे ज़्यादा पूछे जाते हैं. यूपीएससी इस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछती है, बट पूछ भी सकती है बिकॉज यूपीएससी कैन आस्क एनीथिंग. पर हाँ, आप इतना फैक्चुअल डिटेल जो है अवॉइड कर सकते हैं यूपीएससी के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया as adopted on 26th November 1949 originally described India as sovereign republic, sovereign democratic republic, it is also right. Socialist republic नहीं, 1942 में नहीं, ये तो 42nd amendment के बाद आया था. Secular republic also not, secular भी 42nd amendment से ऐड किया गया था. Answer is 1 and 2 only. Let's move to another question. What is the legal nature of preamble of constitution? It is enforceable. No, it is not enforceable. Yes, it may be enforced in special circumstances. No, none of the above. No, B is the answer. Let's move to another question. Which one of the following statement about Constitution of India is correct? It was framed between December 1946 and December 1949. No, it is incorrect. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी वो हुई थी December 9, 1946 को, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाता है. द ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वर डिस्कस्ड इन पब्लिक मीटिंग्स. दिस इज ट्रू बिकॉज गवर्नमेंट ने 8 months का टाइम दिया था टू पीपल ऑफ इंडिया टू डिस्कस द ड्राफ्ट एंड प्रपोज अमेंडमेंट्स. इट इज द शॉर्टेस्ट डॉक्यूमेंट, shortest constitution in the world. This is also wrong. It is one of the largest constitutions. It came fully into operation immediately after
The drafting was completed in December 1949. जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है. 26 January 1950. और ऐसा क्यों किया गया था? To commemorate पूर्ण स्वराज that was declared by Pandit Nehru. Next question. Which of the following statement relating to the historic objective resolution was adopted by Constituent Assembly are objective resolution inspired by the shaping of Constitution through all its subsequent stage. It was not just a resolution but a firm declaration, a firm resolve and a pledge. It provided the underlying philosophy of our Constitution. Answer is 1, 2 and 3. It was moved by Pandit Jawaharlal Nehru in Constituent Assembly. Its outline became the ideas for the Constitution of India. It provided the framework of Constitution of India and it describes the philosophy of Constitution of India. Answer is 1, 2 and 3. Next question is, which of the following statements are correct regarding the preamble to the Indian Constitution? It is a source from which Parliament derives its power and authority. Any citizen of India can move to the court if the state or its authority violates any provision envisaged in the preamble. Preamble is not enforceable. It is not a source of power to anybody. Any citizen can move to the court? No. It is not enforceable in court of law. हमने अभी पढ़ा है. Next question. How many types of justice, liberty, equality and fraternity that in order has been mentioned in the preamble of Constitution of India? कितने टाइप के जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी? जस्टिस कौन कौन से हैं? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल 3 हो गए. लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप 5. इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी 2. फ्रेटर्निटी 1. 3, 5, 2, 1 is the answer. Let's move to another question. Which of the following provisions of Constitution of India became effective from 26th November 1949? Elections? Yes. Citizenship? Yes. Emergency provisions? No. Appointment of judges? No. 1 and 2 is the answer. According to Article 394, Constitution of India states only Article 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 367, 379 and 394 came to force since the adoption of Preamble on 26th November 1949. Let's see another question. My iPad has again crashed. The word socialist was inserted into the preamble to the Constitution of India through which one of the following acts? 42nd Amendment Act. All of us know this. We have seen. Let's move to another question. The mind of the makers of Constitution of India is reflected in which of the following preamble? एक बहुत अच्छे टीचर हैं जिनसे मैंने ये सीखा था. प्रियम्बल के लिए अगर आपको कोई स्टेटमेंट मिलता है जिसमें वो कहते हैं कि प्रियम्बल डिस्क्राइब्स द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, दैट इज़ वेरी फिलोसफिकल इन नेचर, तो वो प्रियम्बल की बात हो रही है. Which of the following objectives is not embodied in the preamble to the Constitution? Answer is economic liberty. Liberty of thought, expression and belief है. Liberty of worship है. और economic liberty नहीं है. Economic क्या है? Justice. Next question. Who among the following was a member of drafting committee of the Constituent Assembly?
आंसर BN राव। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने मेंबर्स थे? 7। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना चाहिए। उन मेंबर्स के नाम थे आलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, N गोपालस्वामी अयंगर, BR अम्बेडकर, KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, BL मिटोर एंड DP खैतान। ये सारे नेम्स आप एक बार पढ़ लीजिएगा एंड प्लीज रिमेंबर दैट देयर वर 7 मेंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement with regard to the preamble of the Constitution of India is not correct? Preamble is a part of Constitution. Yes. It states the objectives of the Constitution. Yes. The word socialist was added to Preamble in 1976 by 42nd Amendment. Yes. The word secular was always a part of Preamble. No, it was also added by 42nd Amendment in 1976. Let's move to another question. Which of the following statement regarding the Constituent Assembly are correct? It was not based on adult franchise. Yes, it's true. It was not based on adult franchise. सारे इंडिया के लोगों ने जो adults थे उन्होंने participate नहीं किया था इस election में. It resulted from direct election. No. It was elected from an indirect election by the members of Provincial Legislative Assembly. It was a multi-party body. No, it was dominated by Congress. Muslim League ने participate नहीं किया था. It worked through several committees. Yes, true. Answer is 1 and 4. Another question. Which of the following statement regarding the Constituent Assembly are correct? The Assembly was elected indirectly by the members of Provincial Legislative Assemblies. The elections were held on the basis of adult franchise. The scheme of election was laid down by the cabinet delegation. The distribution of seats was done on the basis of Mountbatten plan. First statement तो same रहेगा जो पहले वाले question में था. Next is the elections were held on the basis of adult franchise. ये भी हमने पढ़ा, ये नहीं था. The scheme of election was laid down by the cabinet delegation. True. The distribution of seats was done on the basis of the Mountbatten plan. No. Mountbatten plan suggested for 2 constituent assemblies. One for the Muslim dominated areas and one for the Hindu dominated areas. अगर हम वो मानते तो हमारे पास आज 2 अलग-अलग constitution होते. For Hindus, we would have different constitution and another for Muslims. Which among the following acts were repealed by Article 395 of the Constitution? The Government of India Act 1935, the Independence Act 1947, purely factual question, nothing to explain. Let's move to another question. On November 1949, which of the following provisions of Constitution of India came into effect? अभी हमने पढ़ा था, ये क्वेश्चन रिपीटेड है. सिटीजनशिप, इलेक्शंस, प्रोविंशियल पार्लियामेंट, फंडामेंटल राइट्स. नो. आंसर इज 1, 2 and 3. Next question. Which of the following laws have been repealed by Constitution of India? Again, repeated question. Government of India Act 1935, Indian Independence Act 1947, 1 and 2 is answer. Preventive detention हमने अभी तक repeal नहीं किया है. Preventive detention is still there in the Constitution. The word secular was added into the Constitution of India by 42nd Amendment, purely factual. Let's move to another question. Which of the following are true regarding the preamble of the Constitution of India? The objective resolution proposed by Jawaharlal Nehru and passed by Constituent Assembly, which ultimately became the preamble. Yes, it is true. The idea of preamble was borrowed from the Constitution of USA. It is also true. The words socialist, secular were adopted by the 42nd Amendment in 1976. This is also right. The preamble incorporates the fundamental rights of citizens of India. No. So the answer is all the 3. 1, 2 and 3. I think मैंने कुछ PDF में
ऐड करने में गलती की है, इसके ऑप्शंस होंगे और उसका आंसर होगा 1, 2 and 3. लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन. विच मैच लिस्ट 1 with list 2 and select the correct answer. Rajendra Prasad, T.T. Krishnamachari, H.C. Mukherjee, B.R. Ambedkar. Role in making constitution. Member drafting committee, chairman constituent assembly, chairman drafting committee, vice chairman constituent assembly. हमने बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस करे हैं जिसमें हमने इन सब के बारे में पढ़ा है, तो आई वांट कि इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दें. लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन. The draft constitution as framed only provides a machinery for government of the country. It is not a contrivance to install any particular party in power, as has been done in some countries. Who should be in the power is left to be determined by the people, as it must be if the system is to satisfy the test of democracy. The above passage from the Constituent Assembly debates is attributed to Dr. B.R. Ambedkar. Next question. The Constituent Advisor to the Constituent Assembly. कितने बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन? P.N. Rao. Who among the following were the members of the drafting committee of the Constitution? We all know, हमने सारे 7 names पढ़े थे. N. Gopalaswamy, Aladi Krishna Swamy Iyer, पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, सरदार पटेल नहीं थे. Answer is 1 and 3. Economic justice as one of the objective of Indian Constitution has been provided is in Indian Constitution में इकोनॉमिक जस्टिस कहाँ पे दिया गया है? प्रियम्बल में और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जब हम पढ़ेंगे तो ये फिर से रिपीट होगा. इट वॉज द लास्ट क्वेश्चन. थैंक यू. अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है, आपको अगर लगता है कि मुझे कुछ भी इम्प्रूव करना चाहिए तो प्लीज़ मुझे अपना फीडबैक दीजिए. मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी. थैंक यू सो मच.